morning, dear students. I wish you all are doing well in your life. Keep studying hard and keep working hard like that. This side here, Priyanka, your biology mentor, to help you with your queries regarding biology. So, in our previous classes, we had studied about the kingdom Protista. In Protista, we saw there are different organisms, and we saw that they have different features, they have different nutrition type. So, we studied three members of the kingdom Protista. They are chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids. So, in this session, we will study the remaining two members of the Protista. They are your slime molds as well as protozoans. Okay. And let's briefly recall what we had studied in our previous lectures. In our previous lectures, we studied that kingdom Monera as well as kingdom Protista. In kingdom Monera, we saw the bacteria are the sole members of the kingdom Monera. In Protista, we saw there are unicellular as well as eukaryotic organisms. Likewise, when we saw in kingdom Monera, there are unicellular as well as prokaryotic organisms. In kingdom Protista, we saw unicellular as well as eukaryotic organisms, and they have very different types of habitat in different members. And we had studied the three members of the kingdom Protista. They are chrysophytes, they are dinoflagellates, they are euglenoids. In dinoflagellates, we also saw that there are some specific organisms who rapidly multiply, who multiply very fast, appearing to see red in color, so that they are called red tides. And there are also some organisms in kingdom Protista who have bioluminescence properties. Bioluminescence means the organisms who glow in the dark. Okay, so that organisms are otherwise called as that organisms who show bioluminescence properties. Bioluminescence means they have the properties which glow in the dark. Why they have the properties? Because to run away from the predators, so that they can confuse the predators. Okay, these are the characteristics, these are the features we saw about the different kingdoms in our previous classes. Okay, okay dear students, so we will study in this session about the remaining two members of the kingdom Protista. They are slime molds as well as the protozoans. Okay, तो slime mold विषय रे हमें टिके देखि दबा कि what are slime molds, सेमानंकर habitat कोन, सेमाने केमिति grow करि परंती, सेमाने केमिति nutrition accumulate करि परंती, और सेमाने केमिति survive करंती in different habitat as well as सेमानंकर reproduction केमिति हुए. तो एटा टिके देखि दबा. We will see in this session about the slime molds. Okay, slime molds कोन मु देखियो तुमको इनिशियल क्लास रे कहि थिली कि तमर जो किंगडम प्रोटिस्टा अछि सेथरे कोन अछंती ना केतेटा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स अछंती आ सेमान को हमें तांकर न्यूट्रिशन बेसिस रे डिवाइड करि दोछु. फर्स्ट जो न्यूट्रिशन बेसिस रे वी डिवाइडेड इनटू दैट ऑटोट्रोफिक as well as saprophytic as well as parasitic organisms. न्यूट्रिशन बेसिस रे हमको देखियो मने पका हम जो फर्स्ट चार्ट ता बनै थिलु, तो से जो न्यूट्रिशन बेसिस रे हम जो चार्ट ता बनै थिलु, तो सेथरे हम देखिले कि आमे न्यूट्रिशन बेसिस रे किंगडम प्रोटिस्टा जेते भी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखा जाउछंती तांको आमे कोन करबा ना तीनटा सेशन रे डिवाइड कर दे परिबा, तीनटा कैटेगोरीज रे डिवाइड कर दे परिबा. फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉप, सेकंड वन इज saprophytic and third one is parasitic. In autotrophs, we saw variety of organisms, variety of members of kingdom Protista. They are chrysophytes, dinoflagellates as well as euglenoids. All the three members, they can be autotrophic and they can synthesize the food by the accumulation of sunlight. Okay. And in euglenoids, you saw that they show some features like to animals as well as some features to plants. That's why euglenoids are called as the connecting link between plants and animals. माने euglenoid कौन करंती ना सेमानंकर सिचुएशन अनुजाई कि तांकर न्यूट्रिशन टाइप टा चेंज हो जाए. एटी न्यूट्रिशन माने तांका बॉडी रे जो न्यूट्रिशन हैला सेटा कथा कहउनी. न्यूट्रिशन माने हाउ दे एक्युमुलेट द फूड, हाउ दे एक्वायर द फूड, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन ऑफ euglenoids. euglenoid कौन करंती ना जत्ते बेले देखिबो तांकर सनलाइट प्रेजेंट थिबो, तो सेमाने सनलाइट रो प्रेजेंस रे सेमाने कौन करंती ना फूड सिंथेसाइज करि परंती. तो सेथि पय सेमाने को कहा जाय ऑटोट्रॉप.
but sometimes in unfavorable conditions, but sometimes there is not sunlight, there is absence of sunlight. In the absence of sunlight, they become heterotrophs. They depend upon other tiny organisms for their survival. Okay, so in slime modes, they are completely heterotrophs. In slime modes, they show saprophytic nutrition type. So we will see in this session that how they depend upon other organisms for their survival. So as I told you that slime molds are saprophytic organisms. So first come into the term saprophytic. What does it mean, saprophytic? Saprophytic means in our previous classes I had told you that saprophytic means those organisms who depend upon the dead organisms for their survival. They are called as the saprophytic organisms. Let's see. Okay, just imagine this is the slime mold. Okay, just imagine this is the slime mold. Okay, this is the slime mold. It is growing upon an organic matter and dead organic matter, that is leaf. Okay, leaf. For example, एटा हला तमर slime mold. Okay, सी कौन करची तार न्यूट्रिशन टाको देखिबा, से केमते न्यूट्रिशन एक्युमुलेट करची सेटा देखिबा. तो सी कौन करची ना एटी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर गोटे भाबी दियो लीफ अछि, तो से केमती कौन करिवो, सेटा को केमिति कौन करिवो ना एक्युमुलेट करिवो, केमिति से डेड ऑर्गेनिज्म को एक्युमुलेट करिवो. देखो तो ये जो स्लाइम मोल्ड देखुछ से एमती टाइप रो गोटे स्ट्रक्चर देखा जाए. इफ वी विल लुक इनटू देयर सेल स्ट्रक्चर, दे लुक लाइक दिस aggregation type cell structure. It means a lot of cells form an aggregation which is called plasmodium. माने बहुत सारा सेल मिसी जाए कि से माने कौन करते ना गोटे एग्रीगेशन फॉर्म कर दियंती. एग्रीगेशन माने कौन, एग्रीगेट हवा माने कौन, यूनियन, वन टाइप ऑफ कौन यूनाइट हवा. तो एठी कौन करती बहुत सारा सेल मिसिकी गोटे एग्रीगेशन फॉर्म कर दियंती, जोटा को आमे कौन कहू ना प्लाज्मोडियम कहू. एठी प्लाज्मोडियम तमर प्रोटोजोआ रे थिबा प्लाज्मोडियम कथा कुहाउनी जे कि मलेरिया कॉज करे. एठी कुहाउची कि किछटा एठी स्लाइम मोल्ड कथा कुहाउची. देयर आर सम organisms who form an aggregation, okay, and that aggregation is called plasmodium. Okay, तो तमे जो स्लाइम मोल्ड देखिबो से स्लाइम मोल्ड रो तमर सेल वन नहीं. तमे जो इनिशियली देखिलो कोन, इनिशियली तमे देखिलो क्राइसोफाइट्स देखिलो, डाइनोफ्लाजेलेट्स देखिलो. क्राइसोफाइट्स रे भी सेल वॉल थिला, डाइनोफ्लाजेलेट्स रे भी सेल वॉल थिला. बट जेतेबेले तमे आसी जाउछ स्लाइम मोल्ड को देखिबो, जते जते तमे इवोल्यूशन को स्टडी करबो, जते जते तमे इवोल्यूशन को आगो को पढ़ी के जिवो, यू विल सी दैट कि धीरे धीरे प्लांट रो कोन होउची ना कैरेक्टरिस्टिक्स को सेमाने कम करके धीरे धीरे सेमाने कोन एनिमल रो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करूछंती. जेमते तमे क्राइसोफाइट्स एज वेल एज डिनोफ्लाजेलेट्स तमे देखिलो कि सेल वॉल इज प्रेजेंट, बट हियर यू विल सी इन स्लाइम मोल्ड सेल वॉल इज कंप्लीटली एब्सेंट. ओके, तो से जो तांकर साइटोप्लाज्म अच्छी से कौन करती गोटे एग्रीगेशन फॉर्म करके से कौन करती गोटे स्ट्रक्चर फॉर्म करती, सेटा हूँ तुम प्लाज्मोडियम. तो सेटा कौन करे ना जो देखुच ऑर्गेनिक गोटे मैटर अच्छी तार सरफेस रे से कौन कर जाए ना कौन हो जाए से रही जाए सरफेस रे रही से कौन करे ना प्रथमे गोटे एंजाइम रिलीज करे. कौन रिलीज करे, एंजाइम. फर्स्ट दे सीक्रेट एंजाइम. व्हाई डू दे सीक्रेट एंजाइम, व्हाई डू दे सीक्रेट एंजाइम ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर. कहीं से माने एंजाइम सीक्रेट करंती, से माने कौन पाई सीक्रेट करंती देखो, कहीं ना जेतेबेले से माने एंजाइम टाको सीक्रेट कले ए जो डेड ऑर्गेनिक मैटर अच्छी ता भीतर कौन रहउथिबो ना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहउथिबो. से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तुम स्टार्च हो कि तुम सेल्युलोज हो, देयर सम टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. सो बाय रिलीजिंग द एंजाइम the slime molds, they break down the complex carbohydrate into the simpler carbohydrate which they can absorb easily, which they can accumulate in their bodies easily. So semane kon करते से जो complex carbohydrate थाए ताको semane break करके semane kon करते ताको easily water soluble semane कोन digestible semane substance टाको तैयारी कर दियंती. सेटा होची तमरा कोन ना simple carbohydrate को सिंपल सब्सटेंस को गोटे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस गोटे सिंपलर सब्सटेंस को सेमाने कौन कर दियंती ना कन्वर्ट कर दियंती, सो दैट दे कैन इजीली एब्जॉर्ब द फूड इनटू देयर बॉडीज. ओके, तो सेमाने कौन करिवे जेमति कि
इजिली कौन करें एब्जर्व करेंगे सो दैट दे कैन इजिली absorb the simpler carbohydrate or the simpler substance into their bodies. Okay, तो एमती से कौन करती ना से जो प्लाज्मोडियम देखिला और स्लाइम मोल्ड्स देखिला एमती से कौन करती से जो लीप देखुच ता ऊपर सेमती धीरे धीरे ग्रो करी जाती. ओके, ग्रो करी जाती. बट अ टाइम विल कम व्हेन द फूड विल नॉट बी देयर. ओके, गोटे टाइम आसी जिवो देयर विल बी नो फूड. तो हाउ विल दे सर्वाइव इन दैट अनफेवरेबल कंडीशन. आम मान केस जमी अनफेवरेबल कंडीशन कौन अनफेवरेबल आमको जो खावा को मिलूनी कि तुम सिचुएशन खराब हो जाऊँगी. जमी फॉर एग्जांपल देख एबे तुम नॉर्मल लाइफ तुम कौन कर नॉर्मल लाइफ रे तुम अच्छ. फॉर एग्जांपल एबे कौन गोटे नेचुरल डिजास्टर पळे आसला. फॉर एग्जांपल फ्लड हो गला कि फॉर एग्जांपल तुम साइक्लोन हो गला. तो तुम मैंने कौन कर घरे रोच कहीं निजक तुमको कौन करार अच्छी गोटे वन टाइप ऑफ गोटे डमांड सिचुएशन को पलाऊच कहीं तुमको निजक कौन करार अच्छी ना प्रोटेक्ट करार अच्छी. सेमती एम केस रे भी से when they have favorable condition it means they are having food in their environment easily plenty of food तांकर कौन चारिपटे अवेलेबल अच्छी. देन अगेन कौन हो जो फूड कौन हो जाऊँगी ना डेफिशिएंसी हो जाऊँगी फूड कौन हो जाऊँगी ना स्टार्वेशन हो जाऊँगी. तो सेमाने से टाइम रे कौन करुछंती निजर कौन करुछंती ना डोमेट कंडीशन को गोटे पळे जाउछंती. तो से समय से कौन करुछंती ना किछि गोटे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शो करिवे. तो जेतेबेले कौन हो गला ना फूड रो डेफिशिएंसी देखागला तो फूड से माने स्टार्व कले तो सेतेबेले से माने कौन करिवे से जो तुम देखुला गोटे एग्रीगेशन थिला गोटे प्लाज्मोडियम रो गोटे जो एग्रीगेशन थिला तो से समय रे दे विल फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज. ओके, एमिति किछटा अपराइट कौन करिवे हाइफास ए ग्रुप ऑफ माइसिलम से माने कौन करिवे ऊपर को फॉर्मेशन करिवे जोटा को हमर कहा होची कोन फ्रूटिंग बॉडीज. फ्रूटिंग बॉडीज फ्रूटिंग बॉडीज कौन. तो ये फ्रूटिंग बॉडीज रे कौन थाए ना स्पोर डेवलप हुए यूनिसेलुलर सेल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुए से माने कहा होची स्पोर. ओके, तो से स्पोर कौन करिवे सेमती रहिबे डोमेंट कंडीशन रे रहिबे जेतेबेले अगेन कौन हबो सिचुएशन फेवरेबल हे जिवो. When situation will be favorable again, तो that spores again will germinate and again will rise. Okay, तो से समय कौन है से स्पोर जो माने केबे डोमेंट कंडीशन रे अछंती काहे ना सिचुएशन अनफेवरेबल अछि अगेन कौन हो फेवरेबल कंडीशन आसीगला से स्पोर माने से माने एयर द्वारा एरियल स्पोर्स दे आर अदरवाइज कॉल्ड एरियल स्पोर्स. एरियल मींस जोटा कि तमर एयर रे अछि. तो से माने कौन है चारियाडे कौन है कि जिवे खेले हे कि रहि गले अगेन कौन हैला तो जेतेबेले फेवरेबल कंडीशन आसीगला दे विल germinate or they will arise. Okay, so all these things related to your slime molds. तमे एगुडा सब पढ़िलो कोन ना slime mold विषय रे पढ़िलो. Next we will look into the next member of kingdom protista, that is your protozoans. See my dear students, here you can see that during unfavorable conditions the plasmodium differentiates and form fruiting bodies bearing spores at their tips. Okay, तमे सेटा देखिला कोन जेतेबेले सिचुएशन अनफेवरेबल हो जाउची तो से समय रे से जो प्लाज्मोडियम तमे देखुथिलो जोटा कि कोन करथिला गोटे डेड ऑर्गेनिक मैटर ऊपर ग्रो करथिला दे विल फॉर्म एट दैट टाइम फ्रूटिंग बॉडीज. ओके, फ्रूटिंग बॉडीज एमती किछटा कौन हम ना तुम हाइफा से माने कौन करेंगे ऊपर को ग्रो करेंगे अपवर्ड ग्रो करेंगे आउ ऑन द टिप्स दे विल फॉर्म बियरिंग स्पोर्स एट द टिप्स. व्हाट इज स्पोर स्पोर्स आर यूनिसेलुलर सेल्स. ओके, तो दे विल फॉर्म स्पोर्स एट द टिप्स. तो से स्पोर्स से माने रहिबे. ओके, जितेबाला कौन होगा तुम एयर द्वारा जाकि से कौन होगा डिफरेंट एरिया रे जाकि कौन होगा से पड़गले. ओके, पड़गले देन व्हेन द सिचुएशन अगेन विल बी फेवरेबल दे विल अगेन राइज. मैंने पुणी एना कौन होगा से फूड मिलगला से सिचुएशन एवं फेवरेबल होगा तो से अगेन से कौन करेंगे ना ग्रो करेंगे. क्लियर. ओके, नेक्स्ट तुम डायग्राम टाको पे मैंने देख और ये डायग्राम टाको देख तुम इजिली बुझी पार. फॉर एग्जांपल देख ये हूँ तुम कौन वन टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम
तो सी प्लाज्मोडियम कौन करुच्ची ना देखिबो तमर गोटे डेड ऑर्गेनिक मैटर ऊपर ग्रो करुच्ची ओके तो धीरे धीरे से कौन करिवो जतबेला सिचुएशन अनफेवरेबल हे जिवो तो से समय कौन करिवो तमर देखिबो फ्रूटिंग बॉडीज तयारी करिवो फ्रूटिंग बॉडीज एमती टाइप रो ही थाए एमती स्टॉक हेतिबो ऊपर कोन हेतिबे ना फ्रूटिंग बॉडीज छोट छोट स्पोर लाइक स्ट्रक्चर थिबे तो से स्पोर कौन करिवे से जो स्पोर हे देखो एटा होचे स्पोर तो से स्पोर कौन करिवे सेमानक पाखरे सेति कैपेबिलिटी थाए सेमाने डॉर्मेंट कंडीशन रे रहि परिबे काहे ना तंकर स्पोर रो तमर देखिबो वॉल थिबो ट्रू वॉल थिबो दे हैव स्पोर्स हैव ट्रू वॉल so that they can survive in adverse conditions also. So when the situation will be again favorable, they will again germinate, okay, to the new slime molds, new young slime molds, okay. Next we will look into the last member of the kingdom Protista, which is protozoans, okay. सो प्रोटोजोआन्स माने थांती हेटेरोट्रॉप्स थांती फर्स्ट हैबिटेट को तांकर हमें कंसीडर करिबा फर्स्ट वी विल लुक इनटू देयर हैबिटेट दे कैन बी सीन इन फ्रेश वाटर दे कैन बी सीन इन लैंड दे कैन बी सीन इन मराइन एंड एज वेल एज ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो से जो प्रोटोजोआन्स तमे देखुछो जनरली से माने थांती हेटेरोट्रॉप तमे इनिशियली ऑटोट्रॉप एज वेल एज हेटेरोट्रॉप देखिलो okay in slime molds you saw they are completely heterotropic organisms and they are saprophytic organism. Here in protozoan you will see they are also completely heterotropic organisms. In protozoans you will also see there are some varieties also. Okay, there are some varieties. Varieties means varieties कौन पे कहला काहे कि ना से मानकर लोकोमोटरी ऑर्गन को नेकी लोकोमोटरी ऑर्गन केमती मने पकाओ आमे मोनेरा रे भी पढ़िथिले लोकोमोटरी ऑर्गन केमती कोन हे पारे व्हाट इज द लोकोमोटरी ऑर्गन इट माइट बी cilia, it might be flagella, it might be your fimbriae also. There are certain type of locomotory organs. Okay, here in protozoans you will see variety of locomotory organs in different types of organisms, and according to their locomotory organ they are divided into 4 categories. First one is flagellated, second one is ciliated, third one is pseudopodia movement, as well as last one is sporozoans. Okay, as I said, according to their locomotory organs, the protozoans are classified into 4 categories. First one you will see amoeboid protozoans. Second one you will see flagellated protozoans. Third one you will see ciliated protozoans, and fourth one you will see sporozoans. तामने तांकर जो लोकोमोटरी ऑर्गन रहउची फॉर एग्जांपल लोकोमोटरी ऑर्गन तमर कोन हे पाला फ्लाजेला हे गला कि तमर सिलिया हे गला कि समटाइम्स तमर कोन हे गला ना डिफरेंट देखियो फिम्ब्री भी हे गला तो समटाइम्स कोन होय ना ए जो तमे देखुचो प्रोटोजोन्स according to their locomotory organ they are completely classified into 4 categories. कौन कौन पिला माने आउथरे कहि दियो कौन कौन ना amoeboid, second we will look flagellated, third ciliated, and fourth one that is sporozoans. So amoeboid रे will see that false fit. Okay, amoeboid रे तमे देखिबो false fit देखिबो. For example देखि दियो एटा होची तमरा amoeba. For example पहले मन देखो this is your amoeba. Okay, so what the amoeba will do, how they will accumulate their food. For example देखो एडी तांकर food अछि एटा तांकर गोटे तो food अछि तो amoeba कोन करिवो तार जो pseudopodia देखुचो फॉल्स देखुचो फूड देखुचो सेटा को से कोन करिवो ना एमते धीरे धीरे ग्रो करिकी धीरे धीरे कोन करिवो से फूड टाको कंप्लीटली कोन कर देबो ना एनसर्कल कर देबो कंप्लीटली सर्कल कर देबो आ ताको कंप्लीटली एक्युमुलेट कर देबो से फूड टाको तो से एमती तार pseudopodia सहाय्य रे कोन करे ना से निजर फूड को एक्युमुलेट करे. तो दिस इज वन टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ योर प्रोटोजोन्स, that is amoeboid protozoans. In amoeboid protozoans you will see pseudopodia as their locomotory organ. Okay, what we will see in flagellated protozoans? In flagellated protozoans, as the name suggests you, for example flagella, as the name suggests you, that is flagella. तार name suggest करूची
कि तुम देखिथिबो से नेम रे ही देखिथिबो कोन अछि ना तमरो एम्बेडेड हे कि अछि नेम रे ही देखिबो लुचि कि अछि तमरो कि फ्लाजेला गोटे वर्ड अछि जेमति अमोइबा रे देखिलो अमोइबा माने तमे पिला माने मने पकेबो कि स्यूडोपोडिया अमोइबार लोकोमोटरी ऑर्गन इज स्यूडोपोडिया तो अमोइबा कहदेला माने तमे मने पकेदेबो कि हां स्यूडोपोडिया सेमति फ्लाजेला फ्लाजेलेटेड सिलिएटेड स्पोरोजॉन्स ए तीनटा तुमको गेस करबा को डिफिकल्ट हबनी बट अमोइबा पिला माने टिके मने रखि दियो दैट इज स्यूडोपोडिया ओके इन फ्लाजेलेटेड प्रोटोजॉन्स the locomotory organ will be flagella. For example, look, I am drawing an organism here that is trypanosoma. Trypanosoma. This trypanosoma, you can see there is locomotory organ which is flagella. Trypanosoma cause sleeping sickness in organisms. Okay. Let's see the next category, ciliated. Ciliated protozoans. In ciliated protozoans, we can have an example that is paramecium. Look students, it is your paramecium. Here you will see some locomotory organs that is cilia. As the name suggests you, cilia. These are cilias. Okay, cilia. Okay. In the anterior part there will be a cavity. In the anterior part of the paramecium there will be a cavity which is called gullet. Okay, mouth cavity which is called gullet. Okay, in this paramecium you will see the locomotory organ is cilia. And how does the cilia help the paramecium? Okay, look, you can see cilia all around the paramecium. पिला माने गोटे केस माने पकाओ ओके गोटे फेस्टिवल माने पकाओ केरला रे गोटे फेस्टिवल माने पकाओ बोट फेस्टिवल माने अछि पिला माने देखो केरला रे बोट फेस्टिवल तुम माने पके परजो देखिबो से जो बोट फेस्टिवल थाए जो बोट रेस हुए तो सेतरे कोन थाए एम देखिबो बोट्स माने कोन थांती एमते पाखा पाखी थांती से बोट रे देखिबो बहुत सारा कोन हिथिबे ना लोक एमते पाखो पाखो बसिथिबे तो से मानक हाथ रे कोन थिबो से जो कातो थिबो हला कातो थिबो देखिनो से कातो थिबो गेस कर पिला माने मन पकाओ से जो फेस्टिवलटा तो से माने कोन करंती से माने ग्रुप हे कि से माने कोन करथांती कातोटा को कोन करथांती ना एमती पानी रे मारू थांती जहा द्वारा कोन होता से बोटटा आगु को जाउ थाए सेम केस इन पारामेशियम सेम केस देखिबो तमे पारामेशियम रे तो पारामेशियम रे कोन करंती तमे गोटे देखिबो से माने से जो सिलियास देखुजो से सिलिया माने कोन करंती ना एमती कोन करंती से जेमती बोट रे तमे देखिलो कातोटा से माने कोन करथला स्टीयर करथला जस्ट लाइक दैट in paramecium cilia is also steer okay से माने कोन करंती स्टीयर करके से माने से जो फूड थाए जहाँ भी फूड थाए से माने से फूड को वाटर करंट रे से माने आगो को नेकी निजर माउथ कैविटीज को नहीं जानती ओके तो एमती से माने कोन करंती ना सिलिया रे हेल्प रे से माने कोन ला गोटे वन टाइप ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन भी हला ता सहित से माने को फूड एक्युमुलेशन रे भी हेल्प कला ओके तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए सिलिएटेड प्रोटोजोन्स इन स्पोरोजोन रे कोन थिबो स्पोर दे देला माने स्पोर माने से देखिबो लोकोमोटरी ऑर्गन कंप्लीटली एब्सेंट तो स्पोरोजोन रे कोन थिबो एग्जांपल हला गोटे प्लाज्मोडियम वाइवाक्स जोडा कि तमरो मलेरिया कॉज करे okay these are the four categories under the protozoan first one is amoeboid protozoan second one is flagellated protozoan third one is ciliated protozoan and the fourth one is sporozoans these are the four categories which are divided on the basis of their locomotory organ okay I was telling you about the ciliated protozoans the ciliated protozoans are completely aquatic okay as they aquatic they live in the where they live in the ponds they can be seen in the ponds they can be seen in the rivers or any aquatic habitat okay so how does the cilia help the protozoans help for example paramecium so let's see how does the cilia help the paramecium in their different mechanisms okay look ciliated protozoans have cavity okay for example I am doing a ciliated protozoan here okay this is a paramecium okay here in paramecium you see there is a cavity that is called mouth cavity that is called gullet okay gullet
Okay. Okay. I am drawing a paramecium here. Look, this is a paramecium. Okay, this is a paramecium. Okay. Here around the paramecium, around their body, there is some locomotory organs that is called cilia. And in the anterior part of the paramecium, you see there is a mouth cavity which is called gullet. Which is called gullet. Okay. Coordinated movement of rows of the cilia causes the water laden with the food to be steered into the gullet. Your NCERT line is to be steered into the gullet. It is easy to easily that passes inside the gullet. तमरा NCERT देखिबो कि लिखा हिची कि coordinated movement of rows of the cilia causes the water laden with the food to be steered into the gullet. Steered जेमति कि तुमको मु गोटे कोन करथिली ना बोट फेस्टिवल एग्जांपल दोथिली केरला रे गोटे बोट फेस्टिवल एग्जांपल दोथिली तमे देखिबो से माने कोन करथांती ना ग्रुप ऑफ लोक माने बसी थांती कात धरि के बसथांती आ जहाज हजार से माने कोन करथांती ना डंगाटा को आगु को नोथांती सेम here occurs in the cilia. तो ये cilia रे same here occurs in the paramecium. ओके तो ये cilia माने कौन करंती सेम जिनसा करंती जोटा कि बोट फेस्टिवल रे देखुथिबो से माने बोट को आगु को नउथिले फॉर एग्जांपल एठी तमर गोटे कोन छि ना फूड अछि तो से फूड टा को paramecium केमती निजर माउथ कैविटी भीतर को निए ना विथ द हेल्प ऑफ सिलियास तो ये जो सिलियास से माने कौन करंती इन द वाटर करंट रे से माने कौन करंती ना मूव करंती से जो फूड टा को देखुथिबो से माने वाटर करंट द्वारा एमती स्टीयर करिकि ताको धीरे धीरे सेमती तांकर माउथ कैविटी आड़ को नियंती सो दैट से माउथ कैविटी द्वारा से फूड टा को एक्वायर करि पारे तो एटा हेई पारे तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सिलियास द्वारा एटा हेई पारे ओके क्लियर so here in this video we show that in protozoans there are generally 4 categories according to their locomotory organ. First one is amoeboid movement which we can see in the organism amoeba. Second one is flagellated movement, for example your trypanosoma which causes sleeping sickness in organisms. Third one is your ciliated movement and here the locomotory organ is cilia and a complete and easy example of is paramecium. Okay, and the fourth one is sporozoans, for example your plasmodium vivax which causes malaria in your organisms. Okay, this much my dear students, and in this session we have completed the kingdom Protista. In next session we will study about the kingdom fungi. Okay, and why different scientists needed kingdom fungi to add in their kingdom 5 kingdom system of classification. कौन पाई fungi रो कौन हला necessity पड़िला need पड़िला सेति पाई हमें kingdom fungi रे completely kingdom fungi को elaborately पढ़िबा. Fungi रो कौन सब characteristics थिला, what are the most efficient characteristics of the fungi so that they could not include the kingdom fungi either in the plants or in the animal kingdom. Okay, why they could not include the kingdom fungi either in the plant kingdom as well as in the animal kingdom. कौन पाई ताको से both the kingdom रे रखी पारलन. Definitely they could have some different and they could have some diverse characteristics so that they could not keep the kingdom fungi in any of the kingdom. Okay, so let's see and we will see it in the our next session. Okay, till that session revise students, revise the what I have studied you, revise it well. Bye.